Hello everyone, welcome to StudyTech. In this video we are going to see how to derive the parallel law, class 11th physics. Before going to this video, please make sure that you subscribe my channel and hit bell icon so you get notification every time. Come to the topic. Today's topics, parallel law, class 11th physics. At first you know what is a Parallelogram parallelogram law of vector addition. It states that the two vectors acting on a particle at the same time be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a point. Their resultant vector is represented in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram drawn from the same points. Now we derive the parallelogram law. At first you draw the diagram of parallelogram. Write down OP equal to A, OP equal to A vector, OR equal to B vector. These are two adjacent sides. OQ is a diagonal resultant vector. Take angle QOP equal to beta. Now draw QN perpendicular to OP प्रोड्यूस. हमें क्या करना है, अब ड्रॉ करना है QN को. ड्रॉ QN perpendicular to OP प्रोड्यूस. Okay. Take angle QPN equal to theta. Angle QPN equal to theta. Okay. Now find PN in triangle PQN. अब हमें क्या लेना है, इन ट्रायंगल लेना है PQN में. क्या करना है, साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H होता है. दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. P is QN, angle opposite of sides is perpendicular and angle opposite of 90 is hypotenuse, PQ. Sin theta QN upon PQ. PQ is B, that is a B. Cross multiply QN equal to B sin theta. QN equal to B sin theta. This one is the equation number first. Okay. Again, in triangle PQN. Now take cos theta equal to B upon में H. Base upon hypotenuse. Base is PN और hypotenuse PQ. PN upon PQ. That is cos theta equal to Pn upon PQ is B. Therefore, Pn equal to B cos theta. Pn equal to B cos theta. Okay. Now you find the magnitude of R. What is the magnitude of R? Magnitude of R vector. You take a triangle OQN. In triangle OQN, write down the Pythagoras theorem. H square equal to P square plus B square. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, OQ. Write down OQ square equal to OP ON square plus QN square. ON square plus QN square. Write down OQ equal to R square equal to ON is OP plus ON, OP plus PN whole square plus QN whole square. Okay. What is the value of OP? OP is A square plus PN. Write the value of Pn. Pn is B cos theta. Write down B cos theta whole square plus
Qn is b sin theta, b sin theta होल स्क्वायर. ओके, अब क्या करो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लगा दो. a स्क्वायर राइट डाउन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2a b cos थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब क्या करो आप, ये देखो b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था, इसमें से और इसमें से आपका b स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. तो राइट डाउन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. राइट डाउन 2ab cos थीटा. तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. राइट डाउन 1. तो 1 into b स्क्वायर, that is a b स्क्वायर plus 2ab cos theta. This one is a r square. Therefore r equal to root under a square plus b square plus 2ab cos theta. 2ab cos theta. r square equal to root under a square plus b square plus 2ab over root cos theta over root. ये हमारा दिस वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r. ये हमारा r का मैग्नीट्यूड है. ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ r कि r का डायरेक्शन क्या होगा. o n q और o n q tan बीटा, टेक tan बीटा इक्वल टू p अपॉन p इज qn अपॉन o q, qn अपॉन on, qn upon perpendicular upon base. Write down qn and on equal to op plus pn, op plus pn. This is the tan beta. Write down the value of qn and pn. qn is equal to b sin theta, b sin theta upon OP equal to A and PN equal to B cos theta plus B cos theta. This is the tan beta. Therefore, beta equal to tan inverse B sin theta upon A plus B cos theta. ठीक है, this is the direction of r. Okay, now you prove the law of cosine. प्रूव किया था r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. हमने निकाला था अभी मैग्नीट्यूड, उसी को दोबारा लिख दिया हमने. अब क्या करो, इन दोनों को लेफ्ट साइड सेट करो. आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab cos थीटा. दैट इज cos थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab. दिस इज द लॉ ऑफ cosine. Okay, now we derive the law of sine. Now you take in triangle ONQ, in triangle ONQ, sin beta equal to, sin beta का फॉर्मूला होता है P upon H. P is Qn upon H. That is H is hypotenuse OQ. That is Qn upon R cross Qn equal to R sin beta. This one is the equation number 3rd. Comparing equation 1 and 2, LHS are equal, then RHS are also equal from equation 1 and 3.
B sin theta equal to R sin beta. You can write it sin theta upon R equal to sin B upon, write on B upon sin beta equal to R upon sin theta. Equation number 4. This one is the equation number 4. Okay. Now you again you take in triangle OPM. In triangle OPM. In triangle OPM, you write the sin beta equal to OP PM upon OP. Write down PM and OP equal to A. Therefore, PM equal to A sin beta. PM equal to A sin beta. Again you take in triangle PQR, PQM, in triangle PQM. Sin alpha equal to P upon H, that is P upon H, that is a PM upon PQ, PM upon PQ. Therefore sin alpha equal to PM equal to PM equal to PM and PQ के बदले में आपको डालना है PQ is R, B, write down B. Therefore PM equal to B sin alpha. B sin alpha. Write down the PM equal to B sin alpha. Okay. You see that the PM equal to A sin beta and here PM equal to B sin alpha. अब क्या करोगे, इन दोनों को आप कंपेयर करो. क्या कंपेयर करोगे आप इसे? From equation 5 and 6, you can write it A sin beta equal to B sin alpha. Therefore, A upon sin alpha equal to B upon sin beta. This one is the equation number 7. Okay. Compare the equation 4 and 7. Compare the equation 4 and 7. From equation 4 and 7, you can write A upon sin alpha equal to B upon sin beta equal to R upon sin theta. This is the law of sine. Law of, hence proof, law of sine. Okay, hence proof, law of sine. This is the law of sine. That's all in this video. If you have any problem, then write in the comment box. यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.